Look, I think his quality is obviously there, and he bowled well according to his plans. But for us, it's disappointing that I thought in the game, especially at that stage, we were in with a situation where we thought if the two set batsmen could bat a bit longer, maybe sort of we could take the game towards the draw. Yeah, I think it's always. It's a silver lining to sort of look at the bright side and see what went well in this game, and those two were exceptional. I thought how they played in that first innings, Azan especially when he got hit in the head. Abdullah did not know that he was playing till very late that night before the test match, and then even today he got a knock to the head in training, and still to go out there to play with that maturity, to be positive but then also be mindful of the situation. I thought both of them played really well, and you can see that once they start playing more Test cricket, they'll also get that maturity in terms of making even better decisions. But their decision making and their shot selection and how they played was exceptional. 100%. I thought as a bowling unit, I never like it's at the end of the day it's a team effort, so I'd never say that the bowling went wrong or the batting went wrong. But as a bowling unit, as a team, we felt that twice we bowled really well in the first hour. We got 2 early wickets, and that's what you want. You want the middle order to face the harder ball conditions where the bowlers are on top. And twice, I think you have to give credit to Shanto and Mominul for batting well. But as a bowling unit, that's where we'll feel that we let the game slip away. Look, I think cricket changes, especially with the World Test Championship, and you look at your strengths, and you obviously look at the opposition as well, and then you try and decide what surfaces to play on. But I thought it was a very good Test wicket. It had something for everyone. I thought the spinners actually created pressure for the fast bowlers to take wickets, like in the first innings when we lost 7 wickets to spinners in our first innings. I thought it was the pace attack that actually bowled well, and then the spinners, while they were containing, were able to pick up a few more wickets than what I thought would be usual. So it was a good Test wicket. It had everything for everyone: batting, bowling, anything. I don't think as a batsman, you're told to focus on the ball and try and play the ball to its merit. We respect any opposition that we play against, and we play against some very decent bowlers in world cricket, in Test cricket. So for us, as a batting unit, it's always about watching the ball and obviously being aware of the situation. If someone is bowling a good spell, you want to see that spell out. But then if someone is offering some runs to be scored, then you also score off that bowler. I have no idea about that. Look, I think, like I said, I've answered that question earlier. When the target was set, our mindset was to bat and to see how the game goes. And like I said, in Test cricket, you'll always be respectful of the good balls, and then you'll always try to put any scoring opportunities away for runs. And I thought at T we were in a decent position, but we were still some way off a sort of a reasonable position to go for the target. You also have to take light into account. I don't think 75 overs was possible. So in terms of that, again, you assess conditions and you assess situations at certain points, and I thought at T when the 2 set guys went in, I thought we were in a decent position. Turning point, I think there have been a lot of turning points in the game. We can't pinpoint it to one, so as a team we have to look at things collectively and see the mistakes we've made. Look, like I said, we can't pinpoint a whole 5-day Test match to one sort of dismissal or one event. There are a lot of things that we will reflect as a team, but yes, at that moment of time, that partnership, I was personally thinking that it was 10 past 4. These guys bat another half an hour to 40 minutes, and maybe even Bangladesh might sort of back off a bit because light's been sort of fading away just as we cross 5 o'clock over here. So that was a very important part in the game. And look, against the lower order, as a bowling unit, you always want express pace. And I thought Rana bowled well against our lower order. Next level, well done, side by side free. Again, इसको थोड़ा सा अभी obviously emotions high होते हैं जब आप हारते हैं. थोड़ा सा इसको practically भी देखना चाहिए. आपकी बात एक उसमें बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो टीम होती है वो हमेशा एक ब्लेंड होता है, और हमने
पास में भी देखा है कि अगर हमने बिल्कुल ही यंग टीम भेज दी है इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है. हम एज ए टीम सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी. आई थिंक मोमेंट्स थे बॉलिंग में पहली इनिंग्स में, बॉलिंग में सेकंड इनिंग्स में, बैटिंग में पहली इनिंग्स में, बैटिंग में सेकंड इनिंग्स में, जो टेस्ट क्रिकेट जिसमें टेस्ट क्रिकेट माफ़ी नहीं देता. तो टेस्ट क्रिकेट में जब तक आप वो परफेक्ट गेम नहीं खेलेंगे, जब तक आप गेम की सिचुएशन को उसके हिसाब से नहीं खेलेंगे या ज़्यादा गलतियां करेंगे तो हमेशा टेस्ट क्रिकेट में आप रिज़ल्ट के दूसरी साइड पे होगे. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें देखनी होंगी, चाहे वो शॉट सिलेक्शन हो, चाहे वो गेम के ऐसे मोमेंट्स हों जिसमें बॉल में हम या फील्ड में हम बेहतर कर सकते थे. और देखें एट द एंड ऑफ द डे बात सबके लिए मतलब क्लियर है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेनी पड़ेगी और ऑब्वियसली रिजल्ट्स के हिसाब से ही एट द एंड ऑफ द डे आप जज करेंगे कि कौन किधर खड़ा होता है. बट कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि बस एक साइड पे ये एक्सट्रीम कर लो, ये दूसरा एक्सट्रीम कर लो. ऑब्वियसली इसको ऑब्जेक्टिवली देख के और एज ए टीम हमारे पास अभी सेकंड टेस्ट मैच है, हम सही तरीके से इसको एनालाइज करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो हमने इधर गलतियां की हैं वो बिल्कुल दोबारा रिपीट ना हो. सर देखें ऑब्वियसली आप स्टैट्स देंगे और मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें बेहतर करनी पड़ेंगी. मैं कभी भी किसी पे ब्लेम गेम नहीं खेलूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश है कि हम एज ए टेस्ट टीम क्या चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें मज़ीद बेहतर करनी है एक अच्छी टेस्ट टीम बनने के. अगर मेरे आप इंटेंशंस का पूछें, मेरे प्योर इंटेंशंस उसी तरफ हैं. चाहे वो टीम सिलेक्शन हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो अपनी बैटिंग पोजीशन हो, चाहे वो कोई भी टीम रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो पाकिस्तान टीम किस तरीके से बेहतर हो सकती है. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि टेस्ट क्रिकेट आपका बेस्ट मांगती है. टेस्ट क्रिकेट में आप कभी भी किसी वीकर ऑपोजिशन से नहीं खेलते. टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें बेस्ट वर्सेस बेस्ट होता है और जहाँ भी आप मिस्टेक्स करेंगे उन आपको मिस्टेक्स का मार्जिन नहीं मिलेगा. सर देखें ये मिस्टेक नहीं है, हर क्रिकेट को आपको PSL हमारी लीग है, उसको भी हम कॉम्प्रोमाइज़ किसी तरीके से नहीं कर सकते. और आजकल के जो मॉडर्न डे क्रिकेटर है वो हर जगह अपने आप को वो करता है, एडजस्ट करता है अपने आप को. गैप्स आते हैं टेस्ट क्रिकेट में, गैप्स मुश्किल होते हैं. अगर हम पहले भी देखें कि जब हम वेस्ट इंडीज़ से खेले उसके 10 महीने बाद हम साउथ अफ्रीका सीरीज़ खेले, उसके 6 महीने बाद हम बांग्लादेश का टेस्ट मैच खेले. तो ये चीज़ें भी हमें, वही मैं कह रहा हूँ कि इनको ऑब्जेक्टिवली देखनी होंगी. जी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों को पूरी टीम को लेनी पड़ेगी, बट इसको हमें इस तरीके से भी देखना चाहिए क्या क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान टीम बेहतर हो.